An idea whose time had come, an idea which forced even the naysayers to stand up in support with full enthusiasm. Hello and welcome to the special broadcast on CNN News 18. I am Arunima. As we move to a new parliament building, India created history. The Women's Reservation Bill is now an act. But was the journey easy? What does 33% reservation really mean for political empowerment of women in this country? How is Bharat reacting to the Nari Shakti Vandan Adhiniyam? Over the next 30 minutes, we are spreading out across the length and breadth of the country to find the answers. परकटी महिलाओं के लिए कानून, राजनीतिक भूल, ऐसी महिलाओं के लिए कानून जिनके लिए सीटी बजाई जाती है. Believe it or not, these were barbs hurled at the Women's Reservation Bill by parliamentarians in the past 2 decades. How did caste versus gender politics really play out over women's reservation? Shireen Elizabeth takes a deep dive into history. माननीय सदस्यगण, प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ. A moment that has long waited its place in the sun. Reservation for 1/3 seats in parliament for women. The moment came in the special session of September 2023, but it was a long time coming. The idea was first floated by Rajiv Gandhi in 1989. He managed to get Rajya Sabha's nod for the bill to provide 33% reservation for women in local body elections. But the Lok Sabha refused to play along. अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है. पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे. उन्होंने लाए थे जो राज्य सभा में 7 वोटों से गिर गया था. Narasimha Rao's government made local body reservation a reality in 1993, setting the stage for affirmative action in Parliament. On the 12th of September 1996, H.D. Devegowda's United Front government, for the first time, introduced the 81st Constitution Amendment Bill in Lok Sabha for reservation of women in Parliament. The late Sharad Yadav, then a JDU MP from Madhepura, had famously said, "Parkati mahilaon ko तय नहीं करने देंगे." His argument was that Women's Reservation Bill will only help short-haired women, a reference to urban and upper caste women. शादी इसकी आजादी होती महिला के रिजर्वेशन से नहीं, किसी महिला को अध्यक्ष बनाने से नहीं, किसी को राष्ट्रपति बनाने से नहीं. ये तो टोटका है. हम इससे कभी सहमत नहीं होने वाले. हिंदुस्तान की औरत तो सही में कैद है शूद्रों की, कैद है, ज्यादा पछड़ी है वो, ज्यादा दिक्कत में है वो, ज्यादा पति से सताई हुई है, ज्यादा शराब पीते लोग, उसको लिबरेट करो. It was clear that parties like SP, RJD, JDU would not yield till a provision for caste-based quota was made in the Women's Reservation Bill. I am happy the brothers and the sisters, mothers of this country will have the benefit, so that what they are all wanted, the reservation bill which I have moved in 96, though I have written several letters, and Arjun Sushma Swaraj has tried their best to see that the bill is passed in Rajya Sabha about 2010. Now finally our present Prime Minister has given a shape. And between 1999 and 2003, the Atal Bihari Vajpayee government made multiple attempts in Lok Sabha to build consensus in favour of the Women's Reservation Bill. But they all turned out to be unsuccessful.
It was in 2010 that the then Manmohan Singh government revived the bill and introduced it in Rajya Sabha. This iconic picture of Sonia Gandhi, Sushma Swaraj and Brinda Karat coming together showed that women across party lines wanted this affirmative action. But the Yadav trio ensured that the gains of Rajya Sabha were lost in Lok Sabha. The scenes in the House of Elders made it clear that the country was not ready to give women their due just yet. वर्तमान विधेयक में कौन आएगा? मैं आपके सामने कहना नहीं चाहता हूँ, आप न होते तो सबके सामने कह देते। कौन आएगा? ऐसी लड़कियां आएंगी उद्योगपतियों की, बड़े बड़े अफसरों की, या लड़कियों को देखकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे? हाँ, बता रहा हूँ आपको। हमारा जो लोकतांत्रिक जो अधिकार हमको मिला है जनतंत्र में, उसका पुरजोर इस्तेमाल करेंगे, चाहे नतीजा जो भी हो। ये हमको फेंकवा दे, मुलायम सिंह को फेंकवा दे, नहीं चलेगा इस तरह से। आंख के सामने ये पॉलिटिकल डकैती, राजनीतिक डकैती, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Ayes 215. Noes 0. Abstention 0. A historic achievement. Congratulations. 5 Prime Ministers tried and failed before Prime Minister Narendra Modi successfully piloted the Women Reservation Bill in Lok Sabha and Rajya Sabha. With just 2 votes against the bill in Lok Sabha and 0 votes against it in Rajya Sabha, parliamentarians across the party line has proved that the time has finally come for the Women Reservation Bill. 33% women reservation in state assemblies and Lok Sabha might not become a reality soon, but the consensus that has been built by the Modi government has surely put his name in the history books. BJP has decided to make this a huge show by crediting Prime Minister Modi for achieving the consensus on Women's Reservation Bill. The Congress too, however, wanted to take credit. They said this was a realization of the dream that Rajiv Gandhi had seen. Sonia Gandhi said the 2023 bill was Hamara Bill, saying that this was a dream that her government had seen. How did this credit war really play out on the floor of Lok Sabha and Rajya Sabha? Let's find out. Women's Reservation Bill. We have actually the woman of the moment, Mrs. Sonia Gandhi. Ji, first your comments on this. This is a huge achievement for the Congress, for the UP and for you personally. Yes, of course, we have been waiting for years because you will know that it was Rajiv Gandhi's, my husband's, vision and promise. And the Panchayati Raj, in fact, was going to be the beginning. So I am extremely happy, of course, for my party, but for all the women of the country. So, we saw those scenes inside Rajya Sabha. Did that upset you? Did that make you think at some point of time that perhaps we could put it off a little later? Or you were determined that this is what the Indian woman should get? We have been waiting for so long. Everybody, all parties have been aware of the content of the bill. It came to cabinet, I'm told, on the 26th. Our coalition partners welcomed it. In fact, Mamata ji was, obviously she almost stood up to welcome it. So once that happened, then we had, of course, the BJP supporting, the left supporting. So where was the need to sort of wait? आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि no seat shall be reserved for women in SC/STs in the 3rd general election. No seat shall be reserved for women in the 3rd general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था
कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। You fought for this issue. Your message to the women who are watching you. Well, congratulations. I truly believe this is going to be a very, very big step in empowering women, in bringing about all those sensitive issues that we don't really see any men discussing, any prominent politicians discussing on various platforms like parliament and assemblies, and hopefully with a lot of women making their space into the parliaments, all our issues will be addressed and discussed. And Congress claiming credit for it? Let them claim, credit and love are not for sale. It has to be earned and they should work for it. They forgot about this bill in the last 16 years. Suddenly coming to claim credit is a little unfair to begin with. But let them try. People will decide ultimately. India is in a celebratory mood, but there are some who are striking a note of cautious optimism given the reality of Sarpanchpati, Adhyakshpati that we have seen at the ground level. My colleague Saurabh Rathore visited a reserved seat of Maner in Patna to find out how women's reservation actually plays out in Bharat. For years, this has been Geeta Yadav's routine. Getting up early in the morning, preparing tea, looking after the house. But for the past 2 years, attending to the needs of her village has also been added to her responsibilities. Geeta is the district councillor of Maner Circle, Patna. In 2021, the seat was declared reserved for women, and goaded by her social worker husband, Geeta won the seat with a margin of 10,000 votes. But has the new role of a public representative come easy? मेरे हस्बैंड मेरे को अनुप्रताप मेरे को बहुत मदद की है और आगे बढ़ने के लिए बोले, महिला सीट हो गया था इसलिए लड़े। अब बहुत मेहनत की है, सबको भी आगे पीछे घूमे, बोले कि मेहनत कीजिए, कि तुम भी मेहनत करो, मेहनत करोगी तो उसका फल मिलेगा। Like in many other parts of rural and semi-urban India, here too, the male members of the family do the heavy lifting on behalf of the female sarpanch, मुखिया और जिला अध्यक्ष। अगर कभी उनका तबीयत खराब होता है तो उनके सिद्धांत पे और निर्देश अनुसार जो भी कोई काम होता है तो उस काम को हम लोग काम करने का काम करते हैं। अगर जनता के बीच जाना पड़ता है तो हर लोगों के बीच जाते हैं। अगर जो समस्या होता है उस समस्या को सुनते हैं और उन्हें बताते हैं। मदद कर रहे हैं बेटा, इसके लिए अच्छी बात है। अब दूर में महिला तो आदमी निकले, उसके मदद कर रहे हैं, उसकी तो अच्छी बात है इसके लिए। In Rabri Devi, Bihar had seen a chief minister making the journey from the kitchen to the cabinet. Once a butt of all jokes, Rabri managed to last full term and took on opposition's criticism of being a mere titular head. Will reservation at State Assembly and Lok Sabha force more Rabris to stand in for their husbands, or will it truly give them the wings they deserve? Geeta insists people like her have done an honest job to help women become independent, and men get their infrastructure they deserve in the constituency. महिला के लिए हम सोचे कि क्या बोलते हैं, महिला के सिलाई करे, महिला सिलाई करे, या फिर इसके बाद रोड बना, फिर सड़क बना, फिर नाले बने, फिर इसके बाद उन लोग का शौचालय बना। फिर महिला जितना भी सोचती महिला अपना हाथ पैर पर खड़ा हो सकते हैं। महिला बच्चों सबके लिए खेल का फील्ड में बनाने के लिए सोच रहे थे, गरीबों के लिए स्कूल बनाने के लिए सोचा, स्कूल बच्चे गरीब के बच्चे स्कूल में थोड़ा पढ़े लिखे, महिला के लिए बच्चे को दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। But what is the public verdict? क्या लगता है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है इस गांव में? हाँ, हो रहेगा काम। क्या क्या काम हुआ है? ये रोड बना है, स्कूल में सब काम हुआ है। स्कूल में क्या काम हुआ है? मैंने स्कूल बनाया है मैडम। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या क्या हुआ? लड़कियों के लिए मैंने सब सुविधा हुई है। महिला अगर नेता बनती है आप लोगों, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है? अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, और सब ठीक बनाई थे, स्कूल बन रही, नाला बन रही, ये सब चाले पर खाना सब बनते हैं, यही सुविधा है आपका।
महिला हैं इसलिए महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। महिलाओं का जन सुबहता बुझाता ही तुम करता है महिला और हमने के कहते। आप लोग खुश हैं ये यहाँ की पार्षद हैं? हाँ एकदम। क्या क्या फ़ायदा होगा अगर आप लोगों के लिए 33% का जो रिजर्वेशन है वो स्टेट असेंबलीज में, संसद में आप लोग हर जगह रिप्रेजेंटेशन कर सकती हैं? किस तरह से ये फायदा होगा? महिलाओं का वो रिप्रेजेंटेशन करेंगी, है ना। जो भी महिला सांसद होंगी तो वो रिप्रेजेंट करेंगी महिलाओं को, जो महिलाओं की समस्याएं हैं उसको उठाएंगी, है ना, ग्राउंड लेवल पे उठाएंगी। Old and young men of Maner welcomed the Women Reservation Bill. While thanking Prime Minister for the efforts, they think that the male representatives in the past have done very little, and they hope that as women take care of their houses, they would perform better when elected at Panchayat and state level. पहले महिलाओं को घर में रखा जाता था, बाहर नहीं निकलती थी। अब क्या है कि अब एमएलए भी बनेंगी, एमपी भी बनेंगी, जैसे यहाँ की आपकी पार्षद है, महिला है, तो फायदा होने वाला है इससे। महिला भी रहेगी तो ठीक है। महिला का पावर बढ़ना भी चाहिए, उनका कुछ मिलना चाहिए। और जो भी बात है महिला का पावर, आज जो भी है आंगनबाड़ी चाहे कोई भी है, महिला के अच्छा पढ़ाई लिखाई, उनका खाना पीना लेकर बच्चा को मिलना चाहिए और किताब सब मिलना चाहिए। ये लोग बहुत अच्छा है। Chief Minister Nitish Kumar claims that Bihar has already implemented Women Reservation Bill in which 35% reservation has been given to women. Now we have shown that how District Councillor Geeta Devi has been working for her people, especially women and children. In fact, the people of Maner, they have welcomed Women Reservation Bill and they are hopeful that better development will take place when women represents Panchayat and state. BRS is one of the political parties who had upped the ante on the issue of women's reservation. But in their own backyard of Telangana, what is the reality of political empowerment for women? Swastika Das finds out. We have come to Sangareddy district and this is Kandi Mandal, where there is a lone case of a woman Mandal president. In fact, we are going to be joining her in some time now, who leads this entire Mandal, takes care of 23 villages, and this is her army of women personnel. A solid team of 8 to 10 women who have been supporting her. They are her core team members. So with the passage of the Women's Reservation Bill, is it going to usher in a wave of changes when it comes to their daily lives? Come, let's find out. I'm going to open it with ma'am. Ma'am, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और Women Reservation Bill के बाद क्या लगता है कि बहुत सारे changes आएंगे? I'm very happy that this bill has been finally passed in the parliament. Our issues will get more prominence now. We will have more opportunities to work for the general public with greater authority as well. ప్రజలతోని షేర్ చేసుకొని వాళ్ళ అవకాశాలను కూడా అందిపుచ్చుకొని మరి వాళ్ళకున్న మహిళా సాధన. However, there has to be a mindset change among people as many continue to look down upon women who are working in public life. Even if a woman is at a top post, many people don't take us seriously. This needs to change. Swati garu, you are also working here. Me job lo, aapke job mein aim, what are the challenges you are facing? Ladies aim cheyaleru. Most of the times people think women are not capable of anything, not just in this office. In the entire country itself. Hope with this quota there is a change in people's mentality. Chandana garu, you are a former sarpanch kada. Ippudu oka when you were sarpanch, ippudu various states lo manam chusa, we've seen that ippudu women sarpanch hai, decision men lete hai. You have faced similar situation? Exactly, ma'am. I was sarpanch in around 2005, up to 2005-06 I was sarpanch. So, what we say, my father was a very well-known person. So, with his fame, I became a sarpanch. I used to be a very young sarpanch in our district. Nirmal Mandal and Vadyal village. So, I was a young sarpanch at that time, Adilabad district. So definitely nobody used to recognize me as a sarpanch.
how people used to recognize it means, oh, you are a daughter of Palana MC Lingana, he was your father, so your father is MC Lingana, you are the sarpancha. So nobody used to recognize me as a sarpanch directly. So with this 33% reservation, definitely I hope and I cross my fingers that we get our own recognition and people well known individually about ourselves. As a woman, I definitely feel this has to be implemented, has to come forth early, not dragging much time. Acha, Anuradha, I will come to you now. Anyway, women representation in politics is very low. Women are hesitant to come to politics also. Why do you think that is there? अब घर में पूरा औरत ही करते ना मैम, काम वो सब करते हैं. अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो डिसीजन लेने के लिए पूछे तो वो औरत को पूछना है कि औरत घर संभालते मगर डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन तो मैनेज लेते. अगर एक औरत घर संभाल रहे ना, उसका विलेज क्यों संभाल नहीं कर सकता? करते ना, उन्हें भी एक ऑप्शन दिया है तो वो कुछ भी कर सकते, मगर वो ऑप्शन नहीं अभी तक. अभी तक कैसे है बोले तो कैटेगरी वाइज रहता ना मैडम, बीसी कैटेगरी ओपन है, ऐसा है. अगर मेन को नहीं हुआ तो उसका वाइफ को लेते, उसको नहीं हुआ तो उसका मदर को लेते, किसी को तो भी लेके वो सरपंच बनते, मगर उसका सरपंच का आइडेंटिटी मगर लेडीज़ को नहीं मिलते, उसको उसका फादर या उसका हस्बैंड किसी को भी मिलता. As per government data, out of 950 million registered voters, about 50% are women, but their representation in parliament is only about 15% and in state assemblies about 10%, that too mostly from political families. So will this pitch for political empowerment for women only further Parivarvad? My colleague Yash Goyal travelled to Panipat in Haryana, an area often accused of being deeply steeped in patriarchy, and he came back with voices excited about political empowerment of women. Well, we are in Kurana village and this particular village lies in Panipat, Haryana. Today we are here to understand what the women of this very village thinks about the Women's Reservation Bill. It's a long-standing bill which has been presented in the parliament before also, in fact, and the talks are on for this bill for the last 27 to 30 years. And now finally, it seems that this entire bill is taking shape as an act. सबसे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा. अगर हम भारत की बात करते हैं, हम इस देश की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बिल के आ जाने से महिलाओं की आवाज कितनी और सशक्त होगी और कितनी जो वुमेन सेंट्रिक प्रॉब्लम जो हम कहते हैं, महिलाओं से जुड़ी जो समस्याएं हैं, वो क्या आपको लगता है पार्लियामेंट में और सुचारू रूप से उठाई जा सकेंगी? बस अभी तो इतना ही जानते हैं. अभी 33% हमें आरक्षण मिला है, हमें लोकसभा में भी मिलेगा मौका जाने का, राज्यसभा में भी मिलेगा, नौकरियों में भी मिलेगा, हर एक चीज़ में हमें बेनिफिट ही मिलेगा इस चीज़ का. अभी तो हमें इतना ही पता है, आगे देखते हैं अभी क्या करती है सरकार महिलाओं के लिए, क्या नहीं करती है. हम आगे आना चाहते हैं, बस दिन रात तरक्की करना चाहते हैं. हम सब ऐसी औरतें गरीबी में भी रह रही हैं, अगर उनको कुछ मौका मिलेगा वो अपना जीवन सुधार सकती हैं, अच्छे तरीके से जी सकती हैं, अपनी समस्या वो रख सकती हैं, लोकसभा में भी रख सकते हैं, राज्यसभा में भी रख सकते हैं, विधानसभा में भी रख सकती है. हर जगह उसको मौका मिलेगा. भाई मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये मेरे साथ ये भाई अपराध हो रहा है, ये मेरे को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, मेरे कानूनों का अधिकारों का भी हनन हो रहा है, तो मेरे आवाज़ उठा सकती है महिला इस आरक्षण की बदौलत, क्योंकि उसको मौका मिल रहा है अभी 33% आरक्षण में, तो वो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो, उसको रोक नहीं सकता, उसका कानून है ये, वो आवाज़ उठा सकती है. ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाया गया है, इसके आ जाने से महिलाओं को एक रिप्रेजेंटेशन, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट में मिलेगा, डिसीजन मेकिंग पावर में आएंगी. क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में? को बहुत अच्छा बिल है, और जैसे अपन बातचीत करते हैं कि महिलाओं को बराबर का दर्जा देने की, महिलाएं बराबर नहीं हो सकती, अपितु महिला तो आदमी से हमेशा ऊपर होती है, क्योंकि किसी भी आदमी को जो जन्म लेता है वो किसी न किसी महिला की कोख से वो पैदा होता है. और एक लंबे समय से ये अपने देश में मांग चल रही थी कि भाई महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए राजनीति में. अलग अलग बार अलग अलग टाइम पे ये ऐसा बिल भी लोकसभा में भी आया, राज्यसभा में भी कई बार पारित हुआ. लेकिन ये बहुत अच्छा सामाजिक तौर पर अगर देखें, जब महिलाएं चुन के देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जैसे अपन गांव में बैठे हैं, यहाँ की पंचायत में भी आज के टाइम महिला सरपंच है, और ऐसे जब देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भी जाएगी तो निश्चित तौर पर सामाजिक रूप से महिलाएं मजबूत होंगी. तो क्या लगता है वो वुमेन इन पावर की जो इस टर्म की बात करते हैं, क्या उसको और ज़्यादा सशक्त किया गया है इस बिल के माध्यम से? आने वाले समय में इसका काफ़ी लाभ मिलना है, और जो अपन
एक वैश्विक स्तर पे ये बात कर रहे थे कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट को भारत ने बाकी देशों को भी एक दिशा दिखाई है कि जैसे हमारे देश में हम 33% महिलाओं को आरक्षण दे सकते हैं, भविष्य में हो सकता है इसकी और भी ये आगे बढ़े। तो एक भारत इसमें भी आगे बढ़ा है और भारत ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है कि भाई महिलाएं वैश्विक स्तर पर भी पूरी दुनिया की एक लीडरशिप कर सकती है, उनमें वो क्वालिटी हैं वो। The bill has been passed, but the reality of women's reservation in Lok Sabha and Vidhan Sabhas will most probably be realized only in 5 to 7 years. But what is stopping the political parties which are trying to put government in the dock for not giving a proper timeline of implementation? What is stopping these political parties from really showing the path in the upcoming Lok Sabha and Vidhan Sabha elections by providing 33% of the total tickets distributed to women? Will 2024 now see parties which have all come together actually distribute tickets in a way which implements 33% reservation even without the law getting enforced? That is what India is watching.